Honorable Speaker, sir, I take the opportunity to speak on the first batch of demands for grants for agriculture, cooperation, animal husbandry and fisheries, medical and health, transport, administration and labor and employment. Agriculture 18,101.29 crores. Animal husbandry and fisheries 1,657.83 crores. Labor and employment 900.09 crores. Cooperation 158.50 crores. Medical and health 11,737.15 crores. Transport administration 3,262.39 crores. Total amount comes to 3,58,017.26 crores. These demand six together have been allotted as 35,817 crores out of the total budget expenditure of 3,04,965 crores. Thus, these six demands accounts for 12% of the total budget. Agriculture and cooperation. The Agriculture and Cooperation Department have been allotted rupees 18,216 crores. I compliment the Congress government for implementing the farm loan waiver scheme, which has been benefited to 25.35 lakh farmers through waiver of their loans amounting to rupees 20,617 crores in the current financial year. Since the Deputy Chief Minister Sahab has not made any allocation for the scheme in the next year's budget, I assume that all eligible farmers are covered and no one is left out under Raitu Varuna Maafi. सर, इसमें जिस तरह से आप दिए हैं कि अब तक के जितना जो 20,617 करोड़ जो करंट फाइनेंशियल ईयर में आपने वेव किया है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर के लिए इसमें नहीं दिए, तो मैं समझता हूं साहब कि हो सकता है कि टोटल जितने भी फार्मर्स हैं इसमें कवर हो गए होंगे साहब. अगर नहीं हुए तो उनको कवर करिए साहब. द रैतु भरोसा स्कीम हैज बीन relaunched on 26 January this year, and allocation for the scheme in the next year's budget is rupees 18,000 crores. I am sure that the government will fulfill its provide promise to extend the Raitu Bharosa scheme to the tenant farmers, holders in the ensuing financial years. Indramma Atmaya Bharosa scheme has been announced for the farm laborers, families, and the rate of rupees 12,000 annually. And I hope this scheme will be implemented from the commencement of the new financial year on April 1st, 2025. The Telangana has emerged as the highest paddy producer in the country with a record production of 260 lakh tons in 24 and 25 crop year, and acreage under fine rice varieties has increased to 40 lakh acres Kharif season. Telangana government agencies took up the record paddy procurement through 8,332 paddy procurement centers and paid bonus of rupees 500 per quintal for the fine rice procurement in the current crop year. With almost all major reservoirs in Telangana being on the verge of drying up, the state is witnessing acute water shortage for irrigation and standing crop during the ongoing rabi seasons, and also drinking water crisis in several parts of the state, sir. Sir, अभी जिस तरह से ये पानी का भी प्रॉब्लम है सर, अभी तो शुरुआत है दुबकाले की. आज हमारे शहर में खुद तकरीबन बोरवेल सूख रहे हैं साहब, और लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, और पानी जो आप लोग सप्लाई करते हैं वो भी जो है सो बराबर से आप नहीं कर रहे हैं. और जिस तरह से पानी आप देते हैं 10 साल 20 साल पहले का जो एलोकेशन था वाटर का, वो आज भी आप दे रहे हैं, जिसमें आज इतनी आबादी बढ़ चुकी है, उसके बावजूद सेम उतने पानी आप रिलीज करें. काफी पानी की तकलीफ है साहब. आने वाले दिनों में और भी तकलीफ होंगी, क्योंकि अभी से बोरवेल शहर के पूरे सूख रहे हैं साहब. उसके लिए भी आपको कुछ करना पड़ेगा साहब.
The Telangana government agencies took up the record paddy procurement to 8,332 paddy procurement center and paid bonus over this one. With almost all major reservoirs in Telangana being verged of drying up the estate and acute water shortage for the irrigation of the standing crops during the ongoing rabi season, and also drinking water crisis in several parts of the state, sir. With summer yet to begin, Hyderabad is already started unprecedented water crisis. Lakhs of acres of paddy and maize crops have withered across mandals in the several districts due to several water shortage during the ongoing rabi season. Reports indicate a significant reduction in paddy cultivation area with nearly 6 lakh acres let fallow due to the dwindling water supplies. An additional 8 lakh to 10 lakh acres of standing crop across 15 districts are risked due to severe drought conditions. We demand that the agriculture officers shall be asked to conduct field level inspections and file their reports on the measures to be taken to support farmers for the losing their crops by offering compensation and arrangement for crop insurance. Sir, regarding the bird flu, in February 2025, the bird flu has affected the poultry in Andhra Pradesh, and the virus had spread to poultry in the parts of Telangana also. The poultry business was seriously affected, with the people avoiding chicken and eggs, leading to crash in prices of the chicken and the eggs. I would like to know what has been the impact of the bird flu on the poultry industries in Telangana, and what measures have been taken by the Animal Husbandry Department to contain the virus. So medical and health care, sir. In the next year's budget, the allocation for the Health, Medical and Family Welfare Department has been estimated to rupees 11,737 crores. I would request the Medical and Health Minister, Janab Damodar Raj Narasimha Sahab, to ensure that all pending dues to private hospitals in the state under Arogya Shri scheme are cleared and the earlier, so that uninterrupted medical care is available to the BPL families. Sir, कई मर्तबा इस ऐवान में हमारे फ्लोर लीडर हबीब मिल्लत अल्लाह अकबरुद्दीन साहब ने इस बात की आवाज़ उठाई। सर, जितने भी आरोग्य श्री के जो पेंडिंग बिल्स है उसको हुकूमत को क्लियर करना चाहिए। साहब, कई मरतबा उन्होंने बताया और फिर आज मैं भी ये डिमांड कर रहा हूँ साहब कि आप जल्द से जल्द जो आरोग्य श्री के जो पेंडिंग बिल्स है उसको आप रिलीज करिए ताकि आसानी से तमाम गरीब लोगों का इलाज हो सके। सर, I welcome the decision to sanction 95 dialysis centers in addition to the existing 102 centers to extend these families to thousands of poor patients who are in dire need of dialysis. ये बड़ा अच्छा काम किया साहब हुकूमत ने कि आज जो डायलिसिस के पेशेंट्स हैं आज इतने बढ़ चुके हैं, जिसके लिए आपने नए 95 डायलिसिस सेंटर्स आपने कायम किया। There are now 34 government medical colleges across the state with 4,090 MBBS seats. I request the government to ensure that these medical colleges are provided with the required teaching and non-teaching staff. Nursing and paramedical personnel and teaching hospitals are provided with the requirement of infrastructure expenditures. साहब, कॉलेजेस तो हमने सैंक्शन किए हैं, नए 34 कॉलेजेस। इसके कॉलेजेस के लिए सैंक्शन करना जरूरी नहीं है साहब, आपको जो इसमें जितने जो पोस्ट चाहिए आप उसको भी आप सैंक्शन करना चाहिए, क्योंकि आज भी जो एग्जिस्टिंग कॉलेजेस है, एग्जिस्टिंग जो दवाखाने हैं, वहां पर आज भी डॉक्टर्स की, नर्सेस की, हर चीज की कमी है, पूरे स्टाफ की, इवन 4th क्लास स्टाफ की कमी है। तो अब ये जो हम जो नए 34 कॉलेज कर रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है साहब। इसमें साथ ही साथ ये नए आप रिक्रूट करिए जो पोस्ट होते हैं। Similarly, 16 new nurses colleges and 28 allied health centers colleges which have been established recently should be provided the infrastructure and the staff without any delay. सर, ये 16 कॉलेज तो हमने कायम किया सब, और उसके साथ साथ उसकी जो अलाइड हेल्थ स्कीम कॉलेज, हेल्थ एंड साइंस कॉलेज है सब,
इसके लिए आप पहले उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ही प्रोवाइड करिए और उसमें जितना स्टाफ चाहिए उसको प्रोवाइड करिए साहब जल्द से जल्द. The government has sanctioned 3 super speciality hospitals under the aegis of Telangana Institute of Medical Sciences in Hyderabad at LB Nagar, always Sanat Nagar, apart from the hospital functioning in Gachibowli area, sir. The works of these new super speciality hospitals should be expedited so that they become functional and ease the pressure of the existing teaching hospitals under Osmania and Gandhi medical colleges in the twin cities, sir. I would urge the government to upgrade the facilities at Nizamiya Institute of Medical Sciences, MNJ Cancer Hospital, the existing hospitals under the Telangana Vaidya Vidhana Parishad, Director of Medical and Medical Education and Ayush in Hyderabad and other cities in the state, sir. All the Basti Dawakhanas of South Zone, old cities, especially in the old city area, sir, of Hyderabad, the doctors' posts are vacant and there are also shortage of medicines. There is urgent need to fill up the vacant post and provide required quantity of medicine, sir. आज साहब खास तौर से ओल्ड सिटी में सब जितने बस्ती दवाखाने हैं वहाँ पे प्रॉपर मेडिसिन नहीं है सब. पेशेंट्स वहाँ पे आते हैं, डॉक्टर्स नहीं है साहब, डॉक्टर्स की ज़रूरत है, नर्सेस नहीं है, जैसे कि मैंने अभी कहा 4th क्लास स्टाफ नहीं है, तो काम कैसा करेंगे साहब. आज अवाम नासिब ओल्ड सिटी के पूरे शहर की अवाम भी इस तरीके से परेशान है साहब. गरीब लोग जब जाते हैं बस्ती दवाखाने को वहाँ पर डॉक्टर नहीं रहता, प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है साहब, तो किस तरीके से होगा. मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको जल्द से जल्द पूरा मुकम्मल किया जाए साहब. इन बारकस हॉस्पिटल्स 5 doctors and 10 staff nurses posts are vacant, and our floor leader Janab Akbaruddin Owaisi Sahab raised this issue and wrote letters to the health department officials. बारकस कह देखिए साहब, कई मरतबा हमारे फ्लोर लीडर आए जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने लेटर्स लिखा हुकूमत को कि वहां पर 5 डॉक्टर्स और 10 नर्सेस वहां पर नहीं है. तो अब आप देखिए इतने बार लेटर लेने के बाद भी आज तक कोई हुकूमत के कान पे जू नहीं चली साहब. वहां पे अभी तक कोई डिप्यूट नहीं किया गया, पोस्टिंग नहीं हुई. ना सिर्फ बारकस के हॉस्पिटल सर, जितने भी वर्क है साहब उन तमाम में डॉक्टर्स की कमी है, नर्सेस की कमी है. इसको जल्द से जल्द करिए साहब. और दवाएं तो है नहीं साहब, गरीब आदमी दवा कहाँ से लेगा साहब. जब गवर्नमेंट हुकूमत का काम है, दवा देती है हुकूमत, दवाखाने को जाते हो बेचारे दवाई नहीं रहती तो बेचारे गरीब लोग कैसा करेंगे साहब. ना डॉक्टर है, ना दवा है, ना नर्स है, ना कोई चीज है, तो कैसा इलाज होगा साहब. There is need to allot separate space for SPHU office in Barkas cluster with a minimum facilities, sir. Nizamiya TB College and Unani Hospital, sir, doctors and staff nurses posts are vacant, sir. साहब आपको जान के ताजुब होगा साहब, ये एशिया का सबसे बड़ा यूनानी हॉस्पिटल है साहब. ये की जो हॉस्पिटल है एशिया का सबसे बड़ा यूनानी हॉस्पिटल है निजामिया तिब्बी हॉस्पिटल साहब, जिसको निजाम ने इसको बनाया. और वहां पर आज भी इतने पेशेंट्स आते हैं, लेकिन अफसोस के साथ देखना पड़ता है कि उनके पास जो स्टाफ है, डॉक्टर्स को 350 डॉक्टर की जरूरत है साहब, 360 डॉक्टर की जरूरत है. वहां पर आज सिर्फ 140 डॉक्टर्स है साहब. और वहां पर दूसरा स्टाफ जितना चाहिए, इवन नर्सेस नहीं है साहब. 12 नर्सेस है साहब, जिसमें हमें सिर्फ 3 हेड नर्स है साहब. ये दवाखाने में क्लास 4 के स्टाफ नहीं है वहां पर, इवन वॉचमैन नहीं है साहब, सिक्योरिटी गार्ड नहीं है वहां पर. इतना बड़ा दवाखाना है, इतना वो एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं है. रिसेंटली मैंने रिक्वेस्ट किया तो एक सिक्योरिटी गार्ड को तो सुबह एक शाम के लिए, जबकि उस दवाखाने में कम से कम सुबह 4 शाम 4 सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए साहब. मेरे बोलने पर मैंने प्रेशराइज किया वहां के कॉलेज के लोगों को. उन्होंने आयुष में डायरेक्टर ऑफ मेडिकल में बताया वहां से बड़ी मुश्किल से 2 सिक्योरिटी गार्ड है. आप देख सकते हैं किस तरीके से खस्ता हालत हुई है. लेकिन हुकूमत का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, मैं चीफ मिनिस्टर साहब का. उन्होंने जो बोल्ड स्टेप लिया, इन्होंने पॉजिटिव वे में लिया. जैसा कि हमारे फ्लोर लीडर हबीब मिल्लत अलाज अकबरुद्दीन साहब ने कहा, तो उन्होंने इमीडिएट इस दवाखाने के लिए पहले 52 करोड़ का जियो आया था साहब, और 80 करोड़ का उन्होंने काम किया है साहब. इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं.
इस पॉजिटिव में उन्होंने काम किया और दवाखाने की तामीर के लिए सर, ना सिर्फ उसके लिए बल्कि लड़कियों के हॉस्टल के लिए भी उन्होंने डिमांड किया। उन्हें जब भी उन्होंने माना और कहा वहां के करीबी जगह पर हम हॉस्टल बनाएंगे लड़कियों के लिए, मैं इसके लिए उनका शुक्रगुजार हूं साहब, चीफ मिनिस्टर साहब का। और गोलकुंडा हॉस्पिटल में भी साहब वहां भी काफी कमी है साहब। गोलकुंडा हॉस्पिटल में जहां भी हॉस्पिटल से हर जगह पे, गोलकुंडा आर्य हॉस्पिटल साहब 20 डॉक्टर है साहब, 18 नर्सेस है, 4th क्लास 11 स्टाफ साहब, वहां पर नहीं है अभी भी। ये चीजों के इतने बड़े दवाखाने साहब, हुकूमत ने दवाखाने बनाई, काम कर रहे हैं, लेकिन वहां पर डॉक्टर नहीं, नर्स नहीं, कोई इलाज दवा नहीं, काम कैसा होगा साहब। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो हमारा डिमांड है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, इसके ऊपर मैं पूरी उम्मीद है हमारे कांग्रेस गवर्नमेंट से, हमारे डायनामिक चीफ मिनिस्टर साहब से, पूरी उम्मीद है हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब से। इन्होंने बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए हम जो भी करते हैं बराबर इन्हें काम कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसको पूरा किया जाएगा साहब। ये हॉस्पिटल में साहब ये पोस्ट नहीं होने की वजह से साहब, डॉक्टर तो इंतजामिया कॉलेज पीजी कॉलेज है साहब, पीजी कॉलेज है, इसमें ये पोस्ट नहीं होने से इसकी वजह से साहब, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्टाफ द यूजी एंड पीजी सीट्स आर रिड्यूस सर। नहीं होने की वजह से सीट्स रिड्यूस हो रहे साहब। आज डिमांड इसका मेडिसिन का इतना है, लेकिन बच्चों के सीट्स खाली चले आ रहे, सीट रिड्यूस हो रहे साहब, सिर्फ इसकी वजह से। देयर इज ऑल्सो नीड टू फिल ऑल वेकेंट पोस्ट by de-reviving, by de-reserving the reserve post of SC, ST and BC and women, sir. De-reserving the reserve seats of SC, ST and BC and women posts, sir, because Unani medical courses are imparted in the Urdu, sir, Urdu medium, and the persons from the reserve categories do not opt for the Unani courses, sir. साहब ये भी बहुत जरूरी है साहब, जिसकी वजह से हमारे सीट हर साल खाली जा रहे हैं साहब। इसको डी रिजर्व करना जरूरी है साहब, ये सीट्स को, जिसकी वजह से तकरीबन सीट्स हर साल वहां पे खाली जा रहे हैं साहब। रिसेंटली हमने कहा तो जो सीट है तो डी रिजर्व करके फिर से सीट हुए साहब, हमेशा के लिए किया जाए साहब। ये ड्यूरिंग 2022-24 अंडर द 15 फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स सैंक्शन वाज अकॉर्डेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 64 न्यू बिल्डिंग्स फॉर यूनानी पब्लिक हेल्थ सेंटर्स यूपीएससी सर, to provide accessible, affordable and equitable primary health care service to the people living in the cities and the towns, sir. Accordingly, 37 buildings of urban public health centers, sir, have been approved for the construction in the GHMC area, sir, with a sanction of rupees 1.43 crores, 1,83,43,000, sir, for each UPSC, sir. The funds were allocated to GHMC for the construction of the UPSC, but the GHMC has not yet started the work and the local people are facing a lot of problems, sir. साहब इसके लिए ये सोचने वाली बात है साहब, ये इसका जो सैंक्शन आया साहब, तो फंड्स का जो सैंक्शन आया था, पहले सैंक्शन आया 6/9/2003 सर, इसके लिए इसके लिए जीएचएमसी को लेटर लिखा गया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, वहां से उन्होंने कमिश्नर साहब ने जोनल कमिश्नर को लिखा और इसके बाद ये लेटर पहुंचा साहब (31/8/2023) सर। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता साहब, जबकि हमको इसमें बजट पैसा आया साहब, हर दवाखाने के लिए जुमला 68 दवाखाने की बात हुई साहब, जिसमें 1,43,00,000 रुपए हर सेंटर के लिए अलॉट हुआ साहब बजट बनाने के लिए, जिसमें 37 बिल्डिंग का अप्रूवल आया 2023 में। फिर उसके बाद अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, फ्लोर लीडर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ने कमिश्नर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को लेटर लिखा साहब 22/8/2024 में सर।
उन्होंने लेटर क्लियर उस वक्त लिख के उन्होंने कहा जो GHMC को आपने दिए हैं जो बनाने के लिए बस्ती सेंटर्स हॉस्पिटल्स, उसका काम नहीं हुआ। इसके लिए उन्होंने लिखा, हेंस आई रिक्वेस्ट द कमिश्नर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन हैदराबाद टू रीअलोकेट द वर्क्स टू TGMSIDC कॉर्पोरेशन so as to complete the works in time and to serve the needy people, sir. 2024 के जब लिखे साहब, 2023 में सैंक्शन हुआ, काम नहीं होने के बाद में उन्होंने लिखा और आज तक भी जो है सो ट्रांसफर नहीं हुआ। मैं ये गुजारिश करता हूं कि पैसा तो कमिश्नर TGMSIDC कॉर्पोरेशन को किया जाता है ताकि काम जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि जिस तरह से आज पैसा रखा हुआ है GHMC में इसके लिए पर कोई काम नहीं हुआ, तो लिहाजा उस फंड्स को ट्रांसफर किया जाए सर। Please conclude. Just a minute, sir. Give me 5 minutes. The funds were allocated to GHMC just. Hence, I request the government to reallocate the works to the TGMICD Services and Infrastructure Development Corporation so as to complete the works in time and to serve the needy people. Our floor leader Saab wrote a letter to Health Department on 28/2/24, but there is no response till now, sir. Regarding the RTC fleet, sir, need to augment the discussion of RTC fleet, sir. The free bus travel for the women under Mahalakshmi scheme has been quite popular ever since it was introduced in December 2023. As part of the Congress government's Abhaya Hastanam 6 guarantee, sir, since its launch, over 150 crore free trips have been made by the women on 7,227 buses, saving them rupees 506 crores, 5,006 crores in a travel cost, sir. To compensate the TSRTC for this scheme, the government has made an allocation of rupees 3,082 crores in the budget for 2025 and 26. Sir. The TSRTC contributes rupees 1,100 crores to the state exchequer by way of motor vehicle tax, goods and services tax, excise duty tax, VAT every year, sir. The TSRTC, which currently operates 9,400 buses and that transports 60 lakh passengers a day, sir, has planned to purchase 1,570 new buses in the year 2025 and 26 financial year, sir. I welcome the decision of the government to introduce 2,800 electric buses in Hyderabad to replace all the diesel buses in the next 2 years, sir. The Transport Department revenue collection are estimated to go up marginally by 8,478 crores in the current financial year to rupees 8,535 crores in the next financial year. There is an economic growth in the vehicle strength in the state, sir. With thousands of vehicles are being added every day. The number of registered vehicles has crossed 1,75,000 crores mark now, sir. With over 25 lakh vehicles registered in the current financial year, sir. About 15 lakh persons are obtaining driving license every year, sir. The government issues orders for 100% exemption of registration fees and the road tax on the electric vehicles, sir. Hundreds of electric vehicles are being registered every day. With more vehicles plying on congested roads and the highways, road safety is becoming a matter of serious concern, sir. With many fatal and non-fatal accidents reported every day, claiming many innocent lives and causing injuries to many more persons. सर थोड़ी देर हमारे भी तो डिमांड सुनिए ना साहब। और 10 मेंबर्स है। There is a need to take up more extensive road safety awareness program and enforcement activities and to identify the accident-prone areas and implement strategies to reduce the accidents. Regarding city buses, sir, despite an increase in the population and demand for the better connectivity, there has not been a corresponding increase in the number of the buses and the routes, sir.
at a time when burgeoning traffic is a huge concern in the city, there is no increase in the number of public transport buses. Though the Hyderabad's minimum requirement is 6,000 buses, in the city has only 2,800 buses, sir, which is much lower than the number in the other southern metro cities like Bengaluru, which has 6,812 buses, sir. Chennai has a fleet of 5,448 buses. Experts said there was need to add 3,000 more buses in the GHMC area, sir. According to the Union Ministry of Housing and Urban Affairs, to achieve the topmost service level benchmark, there should be 60 buses per 1 lakh population, sir. That would mean the city will require 6,000 more buses. Regarding the bus shelter, sir, in GHMC area, the GHMC and Telangana State Road Transport Corporation are responsible for maintaining the bus shelters, but many bus shelters are in a deteriorated state, sir, causing inconveniences to passengers. There are 1,200 bus stops maintained by GHMC, and number includes only 4,410 bus shelters, sir. With the rising summer heat and deteriorating condition of the bus shelters across the Hyderabad has become a major concern for the thousands of commuters relying on public transport. It has become a common sight to find a bus shelter at multiple locations. पुराने शहर में आइए, ना तो छत है उसको, ना तो बाजू जो कवर कवा है साहब, आप यहाँ पर भी बनाइए. सौतेला सुलूक के साहब यहाँ पर भी जो जितने पैसेंजर आते हैं उनको भी आप एयर कंडीशन बस शेल्टर्स बनाइए, सर. A scheme for gig and platform workers. Decision of the government to extend the social security scheme to the gig and platform workers in Telangana with coverage of 5 lakh accident death insurance by issuing GO in December 2023, sir. There are 17 unemployed exchanges under the Commissionerate of Employment and Training in the state, which are Commissionerate of Employment and Training in the state, which are mandate to register the unemployed youth between ages from 14 to 54, sir. However, the note on demand, an outcome of the budget document of the Labour and Employment Training and Factories Department, does not provide any data of unemployed youth registered in the employed exchange, sir. साहब ये 17 हमारे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है साहब, वहाँ पे कितने रजिस्टर हुए बच्चे, आज तक इसका नाम आज तक नहीं दिया साहब. इसका फायदा क्या है, वहाँ पर कितने ऑफिसर उस पर काम कर रहे हैं कि आप वो भी डेटा दीजिए साहब. The Telangana government has sanctioned 68 advanced training centers in collaboration with Tata Technologies Limited for upskilling the youth for the higher employment opportunities. Out of these ATCs, 65 are attached to the government industrial training industries, sir, institutes, and the other 3 were stand-alone institutions, sir. The ITIs have intake of over 20,000 in various trades, sir. The ATCs offer 6 long-term and 23 short-term courses, sir. An amount of rupees 2,338 crores has been sanctioned for the construction of buildings and procurement of machinery and equipment, sir. The Tata Technologies share is 87.25%, sir, out of the cost, and the state government bears the remaining 12.75%, sir. This is a welcome initiative in a private-public partnership mode, sir. I thank the Honorable Speaker Sahab for giving me this opportunity, sir. Thank you very much, sir.